कूल। Yeah, I liked it. It was pretty simple and easy to understand code. OpenAI गुड गोइंग यार, थोड़ा-सा GPT-5 का कोड भी तो दे दो, हम भी तो देखें। जीपीटी 5 $120 लेगा, अभी तो $25 देते हैं ना हम लोग। तू ही रोएगा। New lightweight agentic API from our very good friend OpenAI. करेक्ट। So let's ओपन get started with this one. या सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू ओपन एआई, राइट? बिकॉज इससे पहले बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल थे, जैसे कि क्रू एआई, आई थिंक क्रू एआई है, ऑटोजेन है, आई थिंक वी यूज ऑटोजेन, राइट? उसके बाद लैंग चेन था, बट लगता है ये ओपन एआई वाले सबको खा जाएंगे। दे आर लाइक हम ही बनाएंगे सब कुछ। सो So OpenAI has come up with this Swarm, Rohan. It's experimental, it's educational. What they're saying, it's a lightweight agentic orchestrator. जो ये Autogen and this AI were doing, now they are going to, they're giving an lightweight framework, which you don't need to use those frameworks, and you can create your own agentic system from this lightweight framework. इसको समझते हैं, Rohan? This is the GitHub page, right? करेक्ट, दिस इज द गिटहब पेज। ये उनका ही So, पेज है। सो आई थिंक mm-hmm, फर्स्ट इट्स लाइक ए नॉर्मल इंस्टॉलेशन, राइट? दैट कि तुमको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्वर्ण mm-hmm. वो तो करना ही है, राइट? थोड़ा ज़ूम करना, रोहन, थोड़ा ज़ूम करना। दिख रहा है? हाँ, हाँ। इतना नहीं, थोड़ा-सा कम। अभी? आई थिंक इट्स बस, गुड, राइट? परफेक्ट, ओके। सो परफेक्ट। फर्स्ट स्टेप है कि हमको पाइथन 3.10 चाहिए। 3.9 है हुँ, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू इंस्टॉल दिस फर्स्ट। एंड देन हम पिप से उसका पैकेज इंस्टॉल करेंगे, या फिर हम यहाँ या यहाँ दोनों दिया गया है। आई थिंक वी कैन जस्ट डू पिप इंस्टॉल एंड सो ऑन, मे बी इट विल या शुड वर्क। और ये उसका यूजेस है, ये एक एग्जांपल है। सो आई थिंक अभी तक ओके। हमने जितने भी देखे हैं, या तो ऑटोजन हो या फिर कोई आई हो, राइट? उन दोनों में क्या होता है कि फर्स्ट वी क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स, जिनको या तो सिस्टम प्रॉम्प्ट दे करके, या फंक्शन कॉलिंग दे करके, या फिर आप उसको अलग अलग टास्क प्रोवाइड करते हो, राइट? एंड देन वी यूज सम डिजाइन पैटर्न्स टू एक्चुअली कंबाइन ऑल दिस टू फॉर्म ए टास्क। तो सो वी हैव अ टीम ऑफ एजेंट्स, एजेंट ए, एजेंट बी है। करेक्ट। एजेंट ए को हेल्पफुल एजेंट बना दिया, एजेंट बी विल ओनली स्पीक इन हाइकूज़, ओके? दैट्स अ डिफरेंट पर्सनैलिटी they have given to agent B. And what they're यस। doing is there's also a function called transfer to agent B. तो ये when an agent A wants to transfer the work to agent B, तब I हम्म। think this will be हाँ, useful. सो आई थिंक अगर तू ऑटोजन से कंपेयर करेगा तो उसमें यू नो देयर इज ए सीक्वेंशियल कॉन्वर्सेशन पैटर्न, ग्रुप चैट पैटर्न, राइट? एंड देन देयर इज ए नेस्टेड पैटर्न। तो ये लगता है ये अभी बहुत नया है, इसलिए इन्होंने फंक्शन के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, बट आई थिंक इट इज़ द सेम थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट? वहाँ पे भी हम एक ग्रुप चैट मैनेजर बनाते हैं या एक सीक्वेंशियल चैट बनाते हैं और बताते हैं कि ये एजेंट के बाद ये कॉल कर सकता है, इसके बाद ये हो सकता है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, राइट? Absolutely. So when you initialize a lot of agents, there are few agents which are specialized in some task and few agents have some tools. Now, करेक्ट। when you run one agent, उसको कुछ काम है, उसको दूसरे को ट्रांसफर करना है, so it will transfer it to that agent and that agent would maybe do the function calling part and then give the response back. So a lot of multi-agent conversations and orchestration ka part, I think this Swarm is handling down. Let's go down and see a little bit in depth. एंड आई थिंक इसका एक और क्या एडवांटेज है, जैसा कि मैं सैम एल्टमैन का एक वीडियो देख रहा था, राइट? उसमें क्या बोला उसने कि देर आर एक्चुअली 5 स्टेजेस ऑफ एजीआई, राइट, दैट वी वांट टू अचीव। सो फर्स्ट वन था जो रैक थे, जो हम सब ने बनाया, राइट? कि टेक्स्ट लो, वेक्टर Mhm. डेटाबेस में डालो और सिमिलैरिटी सर्च करो या सिमेंटिक सर्च करो या हाइब्रिड सर्च करो, राइट? एंड देन यू गेट सम रिजल्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप अभी अगर तेरे को पता होगा तो रेस्पबेरी आया है, राइट? जो जीपीटी का रेस्पबेरी वर्जन, उसमें उन्होंने क्या किया है कि सेकेंड स्टेप है कि पहला तो रैग था, एंड सेकेंड था बेसिकली कि गिव मॉडल वे टू थिंक। सो अगर तू देखेगा Time to think, yes. टाइम एंड वे, राइट? तो उसके कारण कैसा होता है कि अभी स्ट्रॉबेरी मॉडल में उन्होंने क्या वो ऑटोमेटिक यूज किया है, राइट? जहाँ पे तू कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो फर्स्ट इट क्रिएट्स द प्लान एंड देन इट ट्राइज टू एग्जीक्यूट इट। तो दैट इज द सेकेंड Mhm. स्टेप। थर्ड स्टेप इज कि after you have a model which has the capacity to think, then we can create different set of agents, जो अभी ये स्वान के थ्रू आया है। And fourth will be a scientist and fifth will be eventually an organization जो हम अचीव करना चाहते हैं। So अभी हम I think थर्ड स्टेज पे हैं और देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। Let's go down and see क्या concepts है इसके. What are all the table of contents and how do you do that? So there are few examples. Let's go करेक्ट। and see what they are telling about this. सो हाँ. ये देखिए, ये उनके बेसिक एग्जांपल्स दिए हुए हैं। Let's तो go and read the overview फटाक से, Rohan. What is the overview?
So overview says that Swarm focuses on making agent coordination and execution lightweight instead of using these big, huge frameworks like LangChains of the world and Autogen. You can just use a lightweight and then customize it according to your needs. It accomplishes this through two primary abstractions, agents and handoffs. एक agent हो गया जो LLM का behavior है and its personalization personality, and then handoff is basically agent to agent communication कि मेरा काम करेक्ट, हो गया, मैंने दूसरे एजेंट को दे दिया, तेरा काम हो गया तो तूने दूसरे एजेंट को दे दिया, समथिंग ऑन दोज लाइंस. यस. एंड इट ऑल्सो सेज कि एक एजेंट हो सकता है, या तो वो एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है और टूल्स भी कैरी कर सकता है. सो इट्स नॉट जस्ट कि अभी तक जीपीटीएम बनाते थे तो कैसा, या तो उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दे सकता था या यूजर प्रॉम्प्ट दे सकता था, राइट? या फंक्शन कॉलिंग किया जा सकता था, बट इट इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव वे. सो आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. This new addition, now we can have instructions as well as tools, and then we can have handoffs between the different agents that we want to create. एब्सोल्युटली. और क्या है रोहन? ये क्या लिखा लेट्स है? गो, ये लिखा लेट्स हुआ गो. है कि swarm agents are not related to assistant in the assistant API. They are named. Okay. Basically, what they're trying to say is that they have built this framework From on top of chat completions API, not on the assistance assistant API. API. Correct. Assistance API जो ChatGPT provide करता है. So this will work with completions API जो standard API है उनके पास उसके साथ. करेक्ट. सो आई थिंक देन व्हाई सॉन, तो ये तो ऑब्वियसली ये बोलेंगे लाइट हाँ वेट जी, हाँ है, जी. स्केलेबल है, कस्टमाइजेशन बाय डिज़ाइन है, ठीक है. एंड देन वी हैव सम ऑफ द एग्जांपल्स. सो फर्स्ट इज द बेसिक एग्जांपल, जिसमें भी है कि फंडामेंटल्स लाइक सेटअप कैसे करेंगे, फंक्शनल कॉलिंग कैसे करेंगे, हैंड ऑफ्स कैसे देंगे, और कंटेक्स्ट का वेरिएबल्स कैसे यूज करेंगे Variables. टू पास इट थ्रू वन एजेंट्स टू अनदर एजेंट्स, राइट? Mm-hmm. And then we have Triage agent. triage agent, simple example of setting up a basic triage agent to hand off to the. अच्छा, ये मेरे को लगता है this is something like a group chat. Chat manager. Chat manager हाँ, है. so it is like a chat manager, right? So you And then submit your request to this agent, and then this agent it will will decide किस decide. agent को भेजना है. Correct. Then Yes. we can have. So this is that. This is cool. Like if like I think we can create 10 different agents, and then we can give it to a triage agent, and it will do it for you. Yeah. And So then हमारा सबसे your favorite. favorite agent, your favorite agent, Rohan, the temperature guy. Temperature guy is here. Come on. ये आई थिंक GPT 3.5 जब से आया है, तब से इन्होंने ये एग्जाम्पल ही चेंज नहीं किया है. दे आर यूजिंग द सेम वेदर एग्जाम्पल. ठीक They want everyone to stay under the weather है. that they can make real money. सो ये तो ठीक है. चलो. ये बट आई थिंक इसका एग्जाम्पल अच्छा रहेगा कि कैसे एजेंट को बना के शायद इन्होंने पीछे एक टूल बनाया रहेगा, राइट, जो वेदर का Yeah. डिटेल्स लाता होगा. सो इट So इज अ गुड. we can see, Rohan, we can see the example of triage through the diagram. Let's scroll and show the diagram first. So what does this say? What is the weather in New York is the question, right? And it first goes to the triage assistant, the triage agent. Now the triage agent will decide कि किसको भेजना है. So करेक्ट. it is going to transfer to the weather agent. Now this is getting passed to the weather assistant, and then weather assistant is going to use a function calling get weather of New York City. वहाँ से 67 value आया, and then it will respond 67 degrees Celsius. So here two agents are there. There's a triage agent who is taking care of calling to the correct agent, something like what a group chat manager does in Autogen. करेक्ट. यस. आई थिंक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आई थोड़ा थिंक नीचे फर्स्ट देखते, कॉन्सेप्ट देखते पहले. कॉन्सेप्ट्स तो वही है कि दिस इज हाउ यू विल रन इट. ये तो सेम है जैसे फास्ट Mhm. एपीआई यूज करते हैं कोई भी पाइथन का पैकेज. क्लाइंट डॉट रन मेथड है इनके पास, एंड दीज आर द This is आर्गुमेंट्स basically स्टेक्स, triggers the agentic workflow client.run, एंड these are the. and there are few variables. Yeah, so then we have a agent, then just a name, right? And then we have a message, then we have context variables, max turn. Max turn is like कितनी बार एक दूसरे के बीच में ऐसा घूमे, ऐसा ना हो कि वो पूरा Yeah. टोकन मेरा घूमते ही रहे. Sometimes agents have this habit of going haywire, and this is I observed one habit when I was using Autogen. They are Correct. just randomly saying hi to each other. Hi, 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 नहीं hi, नहीं, and I infinite think loop में hi, hi. और आई थिंक वो टर्मिनेशन मैसेज के साथ भी कभी कभी वो गलती करता है, राइट? जब वो टर्मिनेट नहीं हो पाता है अच्छे से. For your help, thanks for your help. हाँ Thanks for your help. हाँ, Thanks for your help. हाय हाय नहीं करते, थैंक यू करते हैं वो लोग. Yes. Hi, hi नहीं करते. Thank you करते. That's Yes, right. yes. They are thank you agents. And then we have model overview, I think. So this will Model actually override है कुछ तो. sorry, model override is actually right कि कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हैं हम लोग, right? Okay. Then we have this tools, हमारा favorite, कि हम कुछ tool, and then we can either you want output as a stream or not, and then we have a debug.
And then these are this Okay. response field. This is standard, I think. This is coming from completion API, right? So completion API का सेम रहता है कि एक मैसेज अच्छा एजेंट भी आया है Hmm. इन्होंने नहीं बट The एक नया last डाला agent to है handle message. नाइस Agents है फिर agents की class के बारे में बताया नहीं agent is simply encapsulated set of instructions with set of functions as simple as that. It's करेक्ट just an instructions और है उसके पास थोड़े function calls. ठीक है तो सबसे If we पहले see तो ये भी सेम है राइट कि एक नाम देना है कौन सा मॉडल यूज़ करना है ये बेसिकली सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया एंड दिस इज द फंक्शन यू वांट टू इंजेक्ट एंड देन वी हैव द टूल चॉइसेस इफ यू हैव फाइव which सिक्स टूल्स tools you have यू to use. करेक्ट Yeah, if we see how to initialize an agent, it's pretty much simple. Agent class initialize karo, instructions pass karo. We can also करेक्ट pass functions. If we see a complex agent, and let's go to scroll and see ये if देख there's any तो complex इन्होंने agent. ये रहा ना डिफाइन इन्होंने एक इंस्ट्रक्शंस डिफाइन किया है और इस एजेंट को देखो उन्होंने Okay. इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या Have था the कि user do whatever they want. It's just a simple prompt instructions. हाँ करेक्ट Uh, एंड देन and let's यहाँ पे scroll तो down what क्लाइंट else को is रन किया there. जा सकता है फिर इन्होंने फंक्शन कॉलिंग बताई ये रहा फंक्शंस Okay. स्वान So एजेंट्स agent with and this function is greeting. So it's basically saying hello, hola, whatever. ये देख यहाँ And पे उन्होंने फंक्शन को रजिस्टर किया ऐसे ग्रीट करके सो आई थिंक ऐसे okay. ऐसे हम डिफरेंट मेथड्स बना सकते हैं एंड एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी Mm-hmm. एरे जो भी बोल उसके अंदर हम डाल सकते हैं दिस आर द फंक्शंस दैट वी हैव Functions. So we can have greet, we can have get weather, temperature, and all these functions. And यस based on what the user is asking, let's say if a user is doing just hello, how are you? Then it is going to use the greet function. And if the user is saying, oh bhai, बहुत गर्मी हो रहा है, temperature क्या है? So it will go and see the temperature of the respective function. करेक्ट Awesome. एंड देन दिस इज द हैंड ऑफ एग्जाम Yeah, this is crucial, I think, Rohan, because an agent should be able to transfer it to the other agent. करेक्ट Otherwise, they just देयर इज end नो up doing यूज thank you. बट आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल सो यू हैव टू क्रिएट अ मेथड जो हमने एग्जांपल में देखा जहाँ पे एक है ट्रांसफर टू सेल्स तो यहाँ पे रिटर्न सेल्स को एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है सो Yeah. सेल्स एजेंट एक बनाया गया है एक ट्रांसफर बनाया गया है एक मेन एजेंट बनाया गया है जिसमें उन्होंने फंक्शन कॉलिंग किया ट्रांसफर टू सेल और बाद में Yeah. यू कैन जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन एंड इफ दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेल्स एजेंट देन The दिस question says transfer me to sales agent. So the triage agent is going to send the, transfer to the sales agent. And then the sales agent is going to perform the task and take it ahead. करेक्ट दिस इज हाउ इट विल वर्क Pretty cool. We want to look at few examples. Ron, एक example देखते हैं तगड़ा वाला. Agent handout. What options do you have वो given in the examples? वो ट्रियाज वाला देखते हैं वो ज्यादा सबसे अच्छा वही है आई थिंक दैट विल कवर Yes. मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर यू दिस इज द Triage ट्रियाज agent. एजेंट Agents.py, run.py, bye, run demo loop. Okay. ये देख I think this तो is the ये code. Yes. हाँ तो ये देखिए इन्होंने पहले एक प्रोसेस रिफंड नाम Let's अरे let's see how many agents are there first. So there is a triage agent, देयर इज अ थ्री which एजेंट्स the system. Yeah. So the system messages determine which agent is best suited to handle the user request and transfer the conversation to that agent. तो ये करेक्ट triage agent का काम यही है to direct responses to the different agents, which is responsible for the task. Second agent is sales agent. Be super enthusiastic about selling bees. It's selling bees. And then we have refunds agent, which helps एंड users with refund. और इसके पास दो फंक्शन कॉल है एक प्रोसेस Okay. रिफंड एंड अप्लाई डिस्काउंट जो हमने ऊपर बनाया है Pretty cool. Pretty simple, right? Really think this एंड is quite lightweight. Yeah. And I think it looks more or less similar like other frameworks, right? Because they also Yeah. have the class that is exposed and you just have to call it and give those constructors, right? But huh, The, but it's cool. yeah, the other frameworks like AutoGen and Crew AI, those have become pretty mature. Because of that, उनके पास बहुत सारा boilerplate code आ गया है. And when we see this code now, it feels like it's so simple, right? Uh, Because it's just a lightweight framework which has no dependencies and it's just recently been developed. So OpenAI Rohan is not taking any responsibility कि भैया हम इसको मैनेज करेंगे इसमें कुछ bugs आएंगे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है. They've just given this lightweight framework for development purposes, for research purposes, for educational purposes कि किसी को कोई framework यूज़ नहीं करना है और अपना एक lightweight framework implement करके छोटा-सा उनका यूज़ केस सॉल्व करना है, तो दे कैन यूटिलाइज़ दिस ऑन टॉप ऑफ चैट कंप्लीशंस एपीआई. correct. So I think AutoGen और ये सब जैसा support नहीं मिलेगा, but cool. And then I think फिर उन्होंने वही के अनुसार पहले दो methods बनाए और एक triage agent बनाया और दो main agents बनाए और refund agent को ऊपर वाले दोनों methods दे दिए कि भैया ये सारे तू कॉल कर सकता है हम्म.
एंड सो देन दिस इज़ द एक्चुअल कॉल। एंड देयर आर ट्रांसफर करने वाला है ये, हाँ, ट्रांसफर हैंड तो है ये। हैंड तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है रोहन, 3 चीज़ें हैं। यू हैव करेक्ट, वन एजेंट, यू हैव टूल्स एंड देन यू हैव ट्रांसफर्स, हैंड-ऑफ्स। करेक्ट, यही करेक्ट, 3 चीज़ हो रही है बस, और कुछ भी नहीं है क्या बोलते हैं ये स्ट्रीम लाइट वेट फ्रेम, फ्रेमवर्क में। करेक्ट। सो आई थिंक बट अच्छा है बहुत, कूल। या आई लाइक्ड इट। इट वाज़ प्रीटी सिंपल एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड कोड। ओपनएआई गुड गोइंग यार, थोड़ा-सा जीपीटी 5 का कोड भी तो दे दो, हम भी तो देखें। जीपीटी 5 $120 लेगा, अभी तो $25 देते हैं ना हम लोग। तू ही रोएगा, बोलेगा तू मत सो दे रोहन, भाई।